face any woman is a tough challenge. To face Mamtaji who doesn't give Mamta to me is a tougher challenge. But I am known to take up challenges. Then sir, Mamtaji's courtesy is never lacking. I sometimes think, maybe she is rightly hurt. I sometimes think, I have conveyed everything to her in the first meeting. Ma'am, please spare me, don't fight with me. Because I am your friend. I will act as per my conscience. I told her in the very first meeting, I cannot be dictated by anyone, whomsoever he or she may be, in state of West Bengal or in Delhi. I am saying this to Mr. Shekhar Gupta. I met the Honorable Prime Minister for the first time after he became Prime Minister in 2014, only after becoming Governor. I never sought a meeting with him. Not that I have made some great sacrifice in taking this assignment, but I feel proud to be citizen of this great country. If I have taken a job upon myself, when I started, I'll tell you, I was having last appearance in the Honorable Supreme Court. Distinguished lawyers were against me in that case. It came, I have a tough challenge in the state of West Bengal. I had not come to West Bengal. Right. Then I got letters from friends, former attorney generals, who said, you are tougher challenge. So everyone told me I was challenge. And when I met Mamtaji, I told Mamtaji, let us prove them wrong together. But somehow or the other, she is acting on a script. Now, sir, the script writers can ruin a good actor also. A very good. How can Mamtaji act on a script? She is an actor herself. She is a director herself. Those who write a script need to think about it. Neither Mamtaji can act on a script, nor I can. The script for both of us is Indian Constitution. I think the last question, because his staff wants him. We are quite happy to have him stay on. Yes. A very good evening, sir. I'm from Jadavpur University. She was the one who had torn that CA thing there at the convocation. So taking a cue from the words that you spoke in accordance to Article 159 of the Indian Constitution, that says that you are, being the governor, you are entrusted to protect people's interest. Constitution. Yeah, Indian Constitution. The other part has to be done by Mamtaji. It has to be done mutually, actually, I feel. Thank you. Yeah, everything has to be done in a mutual way. Now, to allow the process of the governance to function very properly in a smooth way, it's a very basic tenet of a democratic structure. Now, two basic bills are pending to your office, sir. One regarding to SC/ST and the other for the mob lynching. They are essential for people's interest, right, in the current scenario. Now, how would you see this in case, is it not a vital job for a governor of a state to protect the constitution and the people's rights into that? Second question, to be very specific, sir, one more incident of that of MP Babul Chipra happened at the Jadavpur University campus. You came there to rescue him. I came to connect with you all. Okay. Anyways, like versions, perspectives changes. So anyway, you came there, and then what? But you rescued, according to our perspective, you rescued him, and then but there was no tweet. Subsequently, there was some vandalism by the BJP goons on the university campus of the university properties. But there hasn't been any tweets from your behalf. Being the chancellor of my university, I would expect more mamta from you, actually, towards the students. So I think I would love to get a review of what you think on that two regards. Thank you, sir. Number one, with respect to the two bills, it's a good question. Sir, हाथ जोड़ लिए, मिलेंगे तो पाँव भी पकड़ लूँगा. मैडम एक बार आइए, मैडम को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहा हूँ कि इनपुट दीजिए. एक का तो ऑप्टिकल इल्यूजन बता ही दिया. उनको कहा कि साहब ऑथेंटिकेटेड भेज दीजिए, वो भेजते ही देख लूँगा. सेकंड स्टेज तो बाद में आएगी. उठाया, अंटायर प्रतिपक्ष ने किया. SC/ST के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने कहा कि देखो SC/ST के मामले में लोकसभा, राज्यसभा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, फिर यहाँ पर स्पीकर साहब, फिर ममता जी सब कह चुकी हैं. तो मैंने कहा क्या करूँ? तो मैंने मेरा पक्ष क्रोनोलॉजिकली लिखकर आर्टिकल 175 टू भी स्पीकर को भेज दिया.
और पश्चिम बंगाल के हर मेंबर पार्लियामेंट को मैंने वो भेज दिया। चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको ले लिया था, तो कुछ ने तुरंत ही व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को अलग कर लिया, पर तब तक मिल गया। बाकियों को मेल पर भेज दिया, पोस्ट पर भेज दिया। तब लेटेस्ट ये है कि जब स्टेलमेट हो गया, इट्स माई आई एम नॉट अ रबर स्टैम्प सर, आई एम नॉट अ पोस्ट ऑफिस, आई विल अप्लाई माई माइंड। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड आई विल नॉट क्लियर अ बिल। The two questions I asked from the secretary, she has not responded, and not only not responded, taken no step thereafter. Then I wrote to the chief secretary, then to the chief minister. Chief minister ने जब नहीं किया, तो मैंने कहा मुझे सब नेताओं की मीटिंग बुलानी चाहिए 2 बिल के ऊपर कि आइए। I am grateful that the Communist Party leaders and Congress Party leaders, they say we can't come on 17th, we will come on 21st. They will come. I discuss with them. ममता जी के यहाँ से सबसे पहले तो एक बयान आया मेरा छपते, सर दे शूट आउट ऑफ द माउथ, मतलब वो कहते हैं ना शूट एट साइट, कि टीएमसी विल नॉट पार्टिसिपेट। अरे भी मैंने टीएमसी को नहीं बुलाया है, मैं लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ। लेजिस्लेचर नॉट टीएमसी, लेजिस्लेचर है लीडर ऑफ द हाउस। जैसे लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ ममता जी हैं, तो मेरी चिट्ठी ममता जी के लिए है। तो ममता जी का आया कि वो प्रीऑक्यूपाइड है। उनके यहाँ से एक फोन आया कि 17 को वो नहीं आ पाएंगे। उनके एक जॉइंट सेक्रेटरी ने मेरे यहाँ स्टाफ को कहा कि नहीं आएंगे। उसी दिन शेखर जी, आपको पहली बार बता रहा हूँ, मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी, आई अप्रिशिएट यू माइट बी हैविंग कमिटमेंट्स ऑन 17, बट लुकिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू, लुकिंग टू द फैक्ट कि आपके यहाँ से कोई इनपुट मेरे बार बार कहने के बाद नहीं आ रहा है, एंड लुकिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू कि पब्लिक डोमेन में आप लगातार बोलती जा रही हैं जो एंटीनेबल प्रेमिस है, यू विल स्पेयर टाइम एट योर अर्लीस्ट। चूंकि वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सेकेंड टाइम में उनको डेट नहीं दी, सिर्फ ये कहा मैडम प्लीज मेक इट कन्वीनियंट एट द अर्लीस्ट ओकेजन सो दैट वी कैन हैव वे फॉरवर्ड अप्रोच। Did you get a response? नहीं सर, नहीं सर, ना ना ना, ब्लैक होल है। दबाना में एक ब्लैक होल है, मैडम के भी एक ब्लैक होल है। वो कुछ चिट्ठियां रिस्पॉन्ड करती हैं, ये नहीं की है, ये नहीं करेंगे तो मैं देखूंगा। अब मेरा फॉल्ट कहाँ है? अ गवर्नर कैन हैव इनपुट। फिर सर कुछ बिल्स के बारे में बात हुई, देखिए किसी भी बिल के बारे में नहीं कर रहे थे, तो मैंने मेरे ऑफिस को कहा यू प्लीज एंगेज इन ड्यू डिलिजेंस। बोला आदमी कम है तो आई विल वर्क ओवरनाइट। तो जितने मैं मेरे ड्यू डिलिजेंस पर पास कर सकता था वो मैंने किए। यू विल नेवर इमेजिन, रात के 1-1 बजे तक एक सिंपल चीज उनसे मांग ली कि जिस एक्ट को रिपील कर रहे हो उसकी कॉपी तो भेज दो। क्यों भेज दो? उसके कुछ प्रोविजंस आपने बचा रखे, फेयर इनफ, मैं कल कर दूंगा। तो आप लोग मुझे बख्शने वाले नहीं हो। आप कहोगे अपने आप को समझता तो एक इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा वकील है और इतनी सिंपल चीज को नहीं देखा। फिर भी मैंने करा कर गूगल से मिल जाती है, ऑथेंटिकेटेड मिल जाती है, सब कर दिया। ये 2 अटक गए। ये क्यों 2 अटक गए? ऑप्टिकल इल्यूजन से दूर हुआ तो असेंबली प्रोसीडिंग्स अटक गई। असेंबली प्रोसीडिंग्स आई तो मैंने मांगी अंग्रेजी में, वो नहीं थी, पर सेम डे रिस्पॉन्ड करता हूं। शेखर जी सेम डे माई फ्रेंड हैज रेज्ड अ गुड क्वेश्चन। जादवपुर का है, एक्चुअली मैं तो जादवपुर के अंदर पढ़ाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टूडेंट ऑफ जादवपुर, आई एम अ फ्रेंड ऑफ जादवपुर। मतलब मेरे से ज्यादा जादवपुर का कोई नंबर 1। नंबर 2, अब बताइए कितना मेरे को पसरना, आप बता दीजिए या लोग बता दिए, उतना और पसर लूंगा। बट आई कैन नॉट बी सबसर्विएंट, आई कैन नॉट बी पोस्ट ऑफिस, I cannot be rubber stamp either of the government here or government elsewhere. I think, no sir, the gentleman there has been raising his hand for a long time. I will take the last question and we'll have to close it. Good evening, sir. My name is. Okay. Go ahead. Yeah. My name is Ujan, and I am a student of Jadavpur University. Shekhar has been unkind to other universities in the state of West Bengal, and there are a number of them. Madhupana is from Calcutta University, sir.
So my question is that when you were mentioning about the incident of Minister Babul Supriyo, you said that you wanted to maintain connect with your students, and that's why you went there. Now my question is that right now in Jadavpur University, as well as across several campuses in West Bengal, there are rampant protests against the CAA and the NRC. Now, as the chancellor, and as you say, as you wanted to maintain connect with your student, why have you not made any constructive attempt to reach out to the students to learn why they are protesting? I think that question is understood, yes. Good question, very good question. Sir, on half a dozen occasions, I have gone public on this issue. One, Citizen Amendment Act is a law validly passed by Indian Parliament. Am I right, sir? Passed after participatory mechanism. Indian Constitution provides a way out to every dispute. Street is not the answer according to me. Have an illustration, sir. Narendra Modi government came, Judicial Accountability Bill. How many members of Parliament supported it, sir? All of them did. More than But- 500. Yes. What did the Supreme Court do? Struck it down, yes. It has also been challenged there. So I tell them we have to have a rational approach. We will be doing great dishonest to our founding fathers. I've gone public with it. Sir, founders, these days you don't say founding fathers, there were women also, so founders. I don't say founding fathers. You Sir, should say this- founders now. No, sir, but I get your point, sir. But I have been saying so for a number of years. Yes, And- but and- life has to change now. And it is there in several judgments of the Supreme Court, sir. Right. So it will take me a while to get away from that. But sir, the point I am making is, Indian Constitution has every way out. Secondly, I am a worried man. Suppose there is a dispute between the central government and the state government. Indian Constitution provides Article 131. Take recourse to it. To take to street, use that language, मरते दम तक, जीवित हूं तब तक. सर, इट्स अ टफ चैलेंज. यू मेरी वाली कुर्सी पर आप आकर बैठिए, आपका रिएक्शन तो इतना खतरनाक होता जो सोच नहीं सकते. This man has kept calm to a level which Shekhar Gupta would not have kept even in the very first week, sir. ये लैंग्वेज होती है क्या सर? This can't be the language of a person who has taken oath under the Constitution. जब तक जीवित हूँ, आखिरी खून की बूंद रहेगी, मेरी डेड बॉडी के ऊपर ये हो पाएगा. Sir, you can't be in that rhetoric while having that position. Sir, what is politics without rhetoric, and that too in Bengal? Sir, politics is fine. Bengal is the home of rhetoric. Sir, Bengal is home of culture. राम मोहन रॉय जी से डाउन द लाइन देखिए सर, बंकिम चंद्र चटर्जी को देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए सर, फ्रीडम फाइटर्स में देख लीजिए. We have in state of West Bengal something which is unrivaled anywhere else. हमारे यहाँ वायलेंस का क्या काम सर? हमारे यहाँ इस लैंग्वेज का क्या काम? This approach is foreign to culture of state of West Bengal.